Okay, very good afternoon to all. Welcome to the class for concrete structure 2. Okay, so before we actually commence concrete structure 2, we need the basics of concrete structure 1. So last class I have started this. Once again. Yes, concrete structure 2. Yeah. So if we see there are four modules. Okay, so first module is basically the design of residential buildings. Okay, multi-stored buildings. So we have to take various types of loads in consideration like gravity, wind, earthquake, okay, and method of substitute frames. Means we will design the residential building using the concept of frames. Okay, design examples. Building movements in column analysis of multi-story frames subjected to horizontal load. That means the first module is nothing but one building we will take, okay, G plus 3 or G plus 4, like that, one building we will take and it will be a framed structure. Okay, so that framed structure we will do the full designing. Okay, columns, beams, and subjected to various types of loading. Okay, here it is given separately, but it is same only. It will be subjected to the gravity load means the self weight, the dead load, the live load, the wind load, the earthquake loads. Okay, so all these type of loads we will consider and we will design the building. Okay, तो एक एग्जांपल लेंगे और उसी से क्या हो जाएगा, ये पूरा मॉड्यूल ही कवर हो जाएगा. Then we will go to the design of water tank, RCC water tank. Okay, so basically this is this water tank design. We have to follow the uh, working stress method. Okay, so here we will see revision of working stress design philosophy, because this water tank and all dams, they are designed in working stress method. So first we will have a revision of working stress method in module 2, and then we will design the water tank. Okay, then we will have to see the IS code provisions. Okay, then circular water tank. Okay, rectangular water tank also, there are various types. Okay, circular means if you see in your college itself, you have a water tank which is circular in nature, right? Then some water tank are rectangular in nature. Okay, and they are overhead water tanks. Okay, then ins water tank. Okay, basic geometrical configuration analysis method, design top domes, cylindrical walls, rings. What is ins tank means? In Polytechnic College, you might have seen one water tank, right? So that type of tank is known as ins water tank. Okay, we have to see the designing. So basically, this concrete structure 2, actually this subject is not there in most of the universities. Okay, this is taught in MTech. MTech, they have a special concrete design subject. From there, this syllabus has been taken, I think, mostly. Some basics is there. Okay, in BTech also some basics is there, but not this much depth. Like if you see the module 3, design of silos, bunkers, this is very complicated structures, these silos and bunkers. They're not any ordinary structure. Anyone is not designing this. Okay, it is very difficult. It is not like we take something and then we design something. Not like that. Very difficult. Okay, so it will take more than this 10 hours. Not possible. Then design of simple bridges. Okay, simple bridges. Basic definitions. Okay, classification, site investigations. Because before you go for any uh, bridge design, okay, you have to do the site investigation, you have to do the soil testing, plus what type of bridge you will suggest. There are a lot of different types of bridges. Okay, here in this module 4 is given only RCC. We will be discussing the RCC structure, RCC bridge. Okay, but if you see nowadays we are using a lot of steel prefabricated bridges. Okay, post tension. Okay,
pre-stressed concrete bridges, okay, box girder bridges. Okay, there are very various types, cable stayed bridges. So we have a lot of options. Okay, arch bridges, steel arch bridges. Okay, a lot of options are available with us. So as an engineer, you should suggest which uh, the type of bridge which will be uh, more suitable for your uh, purpose, for any particular purpose. Okay, because sometimes the bridges may be very small. Sometimes the bridges are very you know carrying a lot of loads. Railway track is there. Then you have 4-lane highway roads. Okay, nowadays we are going for 8 lanes. Okay, so 6 to 8 lane road. So 4 lane is also not sufficient for our present scenario. We are going for 8 lanes. Okay, so we have to keep in mind all these things. Then only we will suggest the type of bridge. But when it comes to RC bridge, okay, small bridges. If you come to the rural areas, like you come to villages, if you come to like district like Dumka, Pakur, Dhanbad, like that, if you see these places, RCC bridges are more common. Why? Because they are less costly. Okay, the raw materials are easily available. Okay, you get the cement, you get the sand, everything in the local market. You get the RCC, that is the reinforcement. You get easily. Okay, and everybody know the from the mason, from the labor, they know how to use the material. Okay, but if you bring a steel structure, then you have to bring a skilled labor, skilled welder, because the welder will know where to weld, how to weld. Okay, a normal person don't know how to do the welding. Okay, what are the critical points? Okay, if you have to tighten a screw, what type of what should be the diameter? Okay, the type of instrument you need. So it's a lot of complication, or you can say a lot of expertise required. Okay, but in RCC, no such expertise. Even one labor, one mason from your village also know how to mix it and how to pour the concrete and how to make it. Right. So it's easy. This RCC bridges are easy. Okay. So I think we'll see all this one by one. Okay. But I will suggest. Okay, I'll see. I can start with RCC tank. Okay, then we can go to residential building, or we'll start with the residential building, then we'll go for RCC tank, like that. Okay, silos bunkers we'll keep in the last. We'll go to bridges then, and then we'll go to silos and bunkers. Okay, we'll see these topics one by one. Before that, I would like to give you some introduction about the RCC, which is required. Without that, you cannot understand this RCC framed structure, uh, and even the bridges also. But some water tank, we will go for uh, working stress method. So there again, we will have a, so that working stress method and all revision we will do here itself. We will not see separately over there. So another thing is, see, RCC is not very difficult subject. Okay, you have to make a decision. RCC में क्या है कि you are designing something. Okay, तो डिजाइन ऐसा नहीं है कि हमारा थ्योरी ऐसा बोल रहा है तो आप भी ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया, आ गया, हो गया, यस सर यही करेक्ट है, नहीं. इट इज लाइक ए आर्ट, है ना. जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यू आर preparing some food in your home. Okay, most of you are not preparing, I know. Some of you like to prepare. Sometimes I am also preparing something. So there is some way. Okay, I can say, or I can give you instruction, or you can read a manual. Give 2 cup of sugar, 1 cup salt, like that. Some flour, है ना, आटा दे दो इतना, चावल दे दो इतना, इसमें मसाला डाल दो. Like that, instruction can be anything. But I can prepare the same thing in my way. You can prepare in your way. Like somebody will first fry and then cool it down, then it will cook, like that. Somebody can directly cook without frying. Like there can be various methods, there can be various style. But ultimate goal is the food should be tasty, it should be eatable, है ना, खाने लायक होना चाहिए. ये नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा ये हो जाए, है ना. इट शुड बी हेल्दी. ये सब बेसिक क्राइटेरिया है. तो लाइक दैट योर आरसीसी डिजाइन. ओके, आई कैन डिजाइन इन माई वे. ओके, यू कैन डिजाइन इन योर वे. बोथ वे कैन बी करेक्ट. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली our purpose should be fulfilled, our structure should be safe, as well as the structure should be economical. ठीक है, ये चीज हमको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा. कंक्रीट डिजाइन, आरसीसी डिजाइन जब भी हम कर रहे हैं, तो हमको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि माई स्ट्रक्चर शुड बी सेफ, stable, or it should be economical also.
इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ये नहीं कि हम तो सेफ बना दिए लेकिन इतना ज्यादा कॉस्ट हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो सेफ है इसके लिए इतना नहीं, दैट इज नॉट फिजिबल। वी हैव टू थिंक अगेन, वी हैव टू रीडिजाइन, वी हैव टू रीकैलकुलेट, वी हैव टू री इमेजिन। ओके, हर एक प्रोजेक्ट, सिविल का हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज है, और वो कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा। दैट कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू प्ले विद इट, है ना। तुमको पहले उसका बेसिक्स को समझना पड़ेगा, बेसिक्स को अप्लाई कैसे करेंगे वो तुमको अपने आप के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, कोड ने तो बोल दिया कि दिस मच यू टेक, दिस मच यू टेक, दिस मच यू टेक, लेकिन वहां पे एज प्रैक्टिकली हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, हाउ टू अप्लाई दैट प्रोविजन, ठीक है, तो दैट यू हैव टू कीप। तुम उसको डिजाइन करो, ठीक है, तुम्हारा आ गया सपोज स्लैब थिकनेस, सर मेरा 175 mm आ गया, ठीक है, गुड, बट यू क्रॉस चेक विथ योर कोड। कोड क्या बोल रहा है कि इसका जो प्रोविजन है ये इतना होना चाहिए, एल बाई डी रेशियो इतना होना चाहिए। Are you fulfilling that criteria? If you're fulfilling, good. Then you check whether if you're fulfilling that criteria, that means your structure is safe. Then you check the cost also, whether that much thickness your cost is, you are able to fulfill the cost. Because कोई भी तुमको प्रोजेक्ट देगा या कोई भी काम देगा तो उसका एक लिमिटेड कॉस्ट है ना। वो अनलिमिटेड तो कॉस्ट पैसा तुमको देगा नहीं कि हाँ बोला तो जब जो पैसा लगेगा हम देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट हम करेंगे तो एक प्रोजेक्ट का बजट होता है कि दिस प्रोजेक्ट इज 100 करोड़ या 50 करोड़, है ना। एक बजट को रख के हम उस काम को वी डू दैट वर्क। ओके, so basically we know what is RCC, reinforced cement concrete, the mixture of cement, sand, okay, aggregate, water, okay, and some additives। ठीक है, एडिटिव्स आजकल के टाइम बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, लोकल में यहाँ पे जितना हम लोग घर का बना रहे हैं, यहाँ लोकल में जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं या मिस्त्री काम करता है, ठीक है, यहाँ पे हम एडिटिव्स यूज नहीं करते हैं। क्यों? एडिटिव्स थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो और हम यहाँ पे लोकल में तो उतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते, यहाँ तो और कितना चीप में हो जाए, कितना कम में मेरा घर बन जाए, ऐसा ही मेंटेलिटी है सबका। ठीक है, और सेकंड है कि यहाँ पे लोकल में अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीजें, और इसको यूज करने के लिए स्पेशल मटेरियल्स या केमिकल्स को यूज करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट का सलाह लेना पड़ेगा, किसी इंजीनियर का। वो लेबर उसको यूज नहीं कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग वहाँ पे कंक्रीटिंग कर रहे थे। ठीक है, दैट वाज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। ओके, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिस बन रहा था, बहुत बड़ा बिल्डिंग था। तो कंक्रीट जो मिक्सचर वो आता था हम लोग का, वी रिकमेंडेड, वी यूज्ड वाटर प्रूफिंग केमिकल्स। उसमें क्या करते थे, कंक्रीट में ही उस केमिकल को मिला देते थे। ठीक है, जब वो पानी और एग्रीगेट और सारा चीज मिक्स हो रहा है उसमें, सीमेंट वगैरह, उसी में उसका डोसेज को कैलकुलेट करके, ठीक है, उसमें मिक्स कर दिया जाता था। तो क्या होता था कि जब तुम्हारा कंक्रीट सॉलिड हो जाएगा तो उसमें वो वाटर केमिकल जो हम लोग वाटर प्रूफिंग केमिकल्स उसमें ऐड किया हो, तो अगर कहीं पे भी कंक्रीट अगर बाई चांस अगर कहीं पे क्रैक अगर रहा ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग, तो दैट टाइम व्हाट विल हैपन, automatically that chemical will react and it will fill that void, it will fill that gap, and there will be no gap. So when there is no gap, automatically the concrete becomes watertight. तो इस तरह का कुछ केमिकल्स आता है, बहुत तरह का केमिकल्स आता है। दिस आई जस्ट गिवन यू वन एग्जांपल, there are huge number of chemicals, and there are big companies who are manufacturing these construction chemicals, okay, which are used in construction industry. There is a lot of chemicals used for various purposes, okay, that is available in the market, not may not be available in Dumka or in nearby places, but it is available in the market. Okay, if you go to Kolkata or if you go to any city, okay, nowadays, so people are faced with challenges जैसे of water का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है cities में। if you go to cities, any city, just I'm not saying Kolkata, some cities are exceptional, but if you go to city like Bangalore, Chennai, they have lot of scarcity of water, there is no water actually. So how do they do the curing? Okay, how do they do the mixing of concrete, because a lot of water is required for mixing. For curing itself we need a lot of water. Okay, big projects are there. They need gallons of water in per day. So what they do, they use the curing compound. There is a chemical. Okay, what they do, after concreting they spray the chemical, the curing compound, they spray the curing compound everywhere. It's like a what you say, like a, it will be like a water only, but it will be, it is coming in transparent color also, it is coming in white color also, like white paint जैसे होता है, जैसे white washing करते हैं ना, चूना पट्टी करते हैं घर में, उस तरह का भी देखने में लगता है। और एक ट्रांसपेरेंट भी आता है, जेल, पानी के जैसा, एकदम जेल के जैसा। उसको क्या करेंगे, एक ब्रश लेके चारों तरफ उसको ब्रश से
पेंट जैसा उसको लगा देंगे, तो बस क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्यूरिंग हो जाएगा। ओके, दैट इज अ केमिकल, दैट केमिकल इज नोन एज क्यूरिंग कंपाउंड। तो वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, पानी आपको लाने के लिए डेली डेली इतना पानी लाने के लिए आपको बहुत दूर से पानी लाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। तो वो कैलकुलेट करके देखा गया कि क्यूरिंग कंपाउंड इजीली अवेलेबल है और हमको पानी के लिए डिपेंडेंसी भी नहीं है। ठीक है, तो वी यूज क्यूरिंग कंपाउंड इन आवर साइट। But for using the curing compound, you need an expertise, you need a proper knowledge how to apply. Okay, whether that person who is applying properly or not. Okay, so these are some of the things we need to consider. So RCC, what are the advantage using RCC? Okay, various advantage already you have read. There are some disadvantage also. It is heavy in structure. Okay, and then we know IS 456 2000, the latest code is this only. It is 20 years old, 21 years old, I will say. Okay, IS 456 2000. Now we are in 2021. So 21 years has passed. We have not updated our code. Okay, but European standard, if you see American standard, they are very much updated. Every year they update themselves. Okay, so we use different type of mixes. Okay, so these already we have studied in our previous classes, but we need these things to design our concrete structure. Okay, so workability is very important. Okay, there is various tests, and then this thing we have to keep in mind. We have to check always. Okay, the tensile strength should be around zero point 0.7 root FCK. FCK is the characteristic cubic strength of concrete. Modulus of elasticity of concrete is 5,000 root FCK. These all things should fulfill whether we uh, do the concrete structure one or two, whatever we design, we need to keep these things in mind. Okay. Then Poisson ratio for concrete. Okay, it varies from zero point 0.1 to zero point 0.3. Okay, creep, shrinkage. These all things we have to keep in mind and it should fulfill the criteria what is prescribed in our IS 456. Whether you are designing in any water tank, you are designing a simple structure, your frame structure, your building, anything. These are common basic things for any type of concrete. Okay. Then when you are designing any bridge, then there definitely there will be a water, so that water may carry some sulfate, some ions, okay, chloride. So these things actually destroy the concrete. They start the corrosion in the concrete. So you have to be very careful. You have to understand that you have to do the testing also sometimes of the water. That water is harmful for the concrete or it is okay. Like we can use it, no problem. In the seaside, okay, you are building the fort where the where the seawater contains a lot of salt. Okay, you cannot. You have to build your structure in the seawater itself, facing the sea. So what you do? You prepare your concrete with the sulfate resistant cement. Okay, so that cement will not react with the sulfate. Okay, it has some chemical compound which do not react or which do not allow to react with the sulfate. So there will be no corrosion if there is no reaction. Okay, then we know this curve is very important. We are using the high strength deform bar, HYSD bar nowadays, which is available in the market. All are HYSD bar, high strength, high yield strength deformed bars. Okay, they have good grip, they have good ductility. Okay, we need ductility. We don't want our structure to be brittle. अगर ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा तो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब भी थोड़ा सा लोड आए, जैसे विंड का लोड आता है ना, जब अर्थक्वेक आता है, वी नीड आवर स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड, है ना। हम नहीं चाहते कि जल्दी से गिर जाए, हम चाहते हैं थोड़ा देर वो स्ट्रक्चर रुके, उस लोड को ले पाए, है ना। तो वी कीप थिंग्स इन आवर माइंड। अभी जैसे G+1 या G+2 या दो दो महला, तीन महला बिल्डिंग बना रहे, चार महला, तो इसमें आपको विंड का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, wind will not have significant effect. But you imagine the height of Burj Khalifa. Okay, it is like 1 kilometer. So 1 kilometer, if it is long, and that also still means on the ground it's having footing, and in the sky it is hanging. It is like a cantilever. है ना, पूरा पूरा का पूरा हवा में वो है. It's like a cantilever. So you imagine the type of wind force that is acting on the building. तो अगर वो बिल्डिंग अगर बिटल हो जाए तो क्या होगा, जैसे ही विंड आएगा ना, तो वो बिस्किट की तरह पट से टूट जाएगा और गिर जाएगा। देयर विल बी एन एक्सीडेंट। दे डोंट वांट दैट बिल्डिंग टू बी दैट मच brittle. Okay, they want it to be flexible, they want it that it should be ductile,
That means it should move, it should have some flexibility, it should move when there is a wind. Okay, तो जो ये है स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर एक्चुअली मूव होता है, ठीक है। वो विंड को एकोमोडेट करने के लिए, विंड का जो फोर्स इसको एकोमोडेट करने के लिए वो थोड़ा सा मूव होता है। वो नेकेड आई से हमको पता नहीं चलेगा, बट इफ वी सी इंस्ट्रूमेंट्स, okay, then you can properly understand how much there is a deflection. Okay, we can measure it. Then type of reinforcement already you know, mine steel, HYSD, deformed bars. Nowadays deformed bars is common. We have to use deformed bars, no other option. Okay, then it has a better bonding. Okay, deformed bar are having 60% greater than the plain or mild steel bars. Okay, it is mentioned in IS 2000. You can see it is very important point. Many competitions and all will ask this point. Okay, it's very important. TMT, thermomechanically treated bar. These are the next generation, or you can say the superior quality of HYSD bar. These are also HYSD bar, but superior quality. The cost is also very high for this TMT bar compared to your simple plain bars or thing. Okay. Nowadays, earlier TL and RINL only they are producing these TMT bars, but nowadays there are a lot of vendors, a lot of companies which are manufacturing these in India. Okay, then these loads, okay, dead load, live load, wind load, snow load, all these loads are given in your IS 456. Okay, I mean not in 456, they have mentioned it in 456, but for loads we have a separate code, that is IS 875. Okay, and in that also they have various parts, part 5, part 6, lot of parts. Okay, so dead load comes under part 1. Okay, and live load or imposed load part 2, wind load part 3, like that. Snow load part 4, special loads part 5, and earthquake load. Yeah, for earthquake load we have a separate code, that is IS 1893 2002. Okay, so these are some of the codes which are where the details for the load is given, like how much load we have to consider. ठीक है, जैसे कि अगर डेड लोड है तो पहले क्या कर सकते हैं हम, डेड लोड निकालने के लिए बहुत ईजी है। डेड लोड निकालना है, सपोज एक एक कॉलम, एक एक मेंबर का डेड लोड निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे। सपोज मेरे मेरे बिल्डिंग पे एक कॉलम है, तो साइज you imagine size will be 250 mm to like 50 mm by 250 mm. ठीक है, so and the height you have 250 mm by 250 mm, the area you can find out, and you know from the code itself you know what is the unit weight for concrete. So unit weight for concrete, you know, that is the 25 for RCC we consume, we consider 25 kilonewton, okay, per meter square. Okay, like that. So what we do, we multiply, and directly we get how much kilonewton force for that column. Okay, then there, what are the total number of columns in our building, we know from the plan itself we can find out. Then the total number of columns we know means we can find out the total load for all the columns in one floor. Okay, like that we can find for the slab also, we can find out for the staircase, and we can find out for our partition wall, whatever is there. Okay, dead load means all the uh, structure, all the components of the structure. Okay, then live load. Live load will means we are keeping our furniture, we are keeping doors, windows, some almirah, like that. In school, we keep our desk, bench, like that. So many things. Hmm. These comes under live load. So, for our code has prescribed that if it is a residential building, you take this much kilonewton. Okay. If it is a shopping mall or commercial space, you take this much kilonewton. If it is a hostel or public use building, you take this much, like that. Code has prescribed. So we directly take from code. No need to calculate anything. Okay. Wind load again. We have to go to the code. We have to see. Okay. We have to first select our area. Suppose I'm going to construct this building in any place. Suppose I'm going to construct in say Dhanbad. So Dhanbad comes under which wind zone? Okay, there are zones in wind zone, and they based on that zone, the code has prescribed you take this much of load, say 5 kilonewton. So we'll take 5 kilonewton for wind load. Okay, then snow. Our region is not falling in snow load. Okay, if we go to Jammu Kashmir, Ladakh, then there is a lot of snowfall. So there we construct any building means we have to consider the snow load. But here no snow,
we will not consider it. If you consider slow load, simply you are wasting money, time, everything. Okay, special load. Sometimes some special structure is there. Example, if I'm constructing a car parking, suppose uh, 110 फ्लोर कार पार्किंग, ठीक है, अभी गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है, तो बिल्डिंग ही बनाना पड़ेगा, पार्किंग बनाना पड़ेगा, 10 महला का फ्लोर का एक कार पार्क बनाना, तो उसमें जो मेरा लोड रहेगा, जो भी डेड लोड है, लाइव लोड है, उसके अलावा जितना कार्स वहाँ पे रहेगा या कोई भी व्हीकल रहेगा, so that vehicle load is will also we have to consider. Okay, or sometimes some special load may come, like hospital bed में you have different type of rooms like ICU, then operation theater, so different type of equipment will be available. Okay, इस सबको अगर consider करेंगे तो you will see that you need different type of load. So some special load will be there. So उसके लिए भी कोड में है कि आप इतना को ले लीजिए, ठीक है. एंड देन अर्थक्वेक वी हैव टू डिजाइन. ओके, अर्थक्वेक लोड वी कैन नॉट टेक डायरेक्टली. अर्थक्वेक में थोड़ा सा डिजाइन है. विल सी व्हेन वी डू. एक क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, एक बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे G+2 या G+3 या G+4 एक बिल्डिंग ले लेंगे और उसको डिजाइन करेंगे, और उसी डिजाइन में हम सारा चीज को देखेंगे कैसे क्या लेना है, ठीक है. तो आई विल सजेस्ट, एक काम करो तुम लोग, ये सब कोड को डाउनलोड कर लो. IS 456 तो होगा तुम्हारे पास, नो प्रॉब्लम. IS 1893 1893 2002 ये नेट पे सर्च करो, गूगल में कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, डाउनलोड करो, ठीक है. और इसका कुछ इंपॉर्टेंट एक दो पेज है जो कि हमको काम में लगेगा, ठीक है. बाकी ये बेसिक है, सिलेंडर का स्ट्रेंथ, इफेक्ट, ये सब बता चुका हूँ, ये भी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट नेक्स्ट में आई हैव नॉट डन दिस टाइम. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल डू, विल टेक वन बिल्डिंग, ठीक है, G+2 और G+3, एंड विल ट्राई टू डिजाइन इट, ठीक है. उसको जब डिजाइन करेंगे, देन ऑल दिस पॉइंट्स विल बी क्लियर. Okay, design of residential building. Okay, so already it is mentioned, so your building will be residential building. Okay, we will see the fundamentals of multi-story building, analysis of various loads. Okay, method of substitute frame, design example, bending moment in column, analysis of multi-story frame substitute to horizontal load. Yeah, this is nothing, not a separate topic, the same topic. We will take one frame structure. Okay, frame structure means we'll have a structure like this. Okay, you have a building like this. Okay, which consists of your main members, consist of columns, beams. Okay, means all your loads. अभी जैसे यहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं, कहाँ पे, हमारे आसपास में, दुर्गा में आसपास में, तो फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत कम, रेयर आई हैव सीन, रेयर, मतलब ये क्या दो, ठीक है. ये सब कुछ मेरा फुटिंग हो गया, ठीक है, इधर फुटिंग, स्ट्रेट लाइन है, मेरा बन रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप पे चल नहीं रहा, ठीक है. तो you see here, so what happens, all the loads of the slab are transferred to the beam, and all the load of the beam will be transferred to the column, and then from the column to the next column, and like that it will come to the footing, and from footing it will go to the soil. Okay, the load transfer mechanism will be like this. Okay, and all the joints, if you see all these joints, okay, these joints will be like a rigid joint, will be like a rigid joint. So any structure where the load transfer mechanism will be directly from the structural membrane, okay, structural member, then that structure is known as a frame structure. Now, suppose here,
in our locality in Dumka and what I have seen, what they will do, कंस्ट्रक्शन के समय क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉलम को खड़ा करेंगे, मतलब पूरा पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, और उसके साथ क्या करेंगे, जो ब्रिक वॉल रहेगा, ब्रिक वॉल को भी साथ साथ खड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रिक वॉल है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, he will construct the beam also and he will construct the brick wall also, ठीक है, सबको साथ में लेके जाएंगे, और फिर ऊपर जो स्लैब रहेगा, स्लैब को एक साथ ढलाई करेंगे, है ना। तो उससे क्या होता है कि क्या होगा कि जो तुम्हारा स्लैब का लोड है, द लोड ऑफ द स्लैब विल बी ट्रांसफर्ड टू योर दिस थिंग, the load of the slab will be transferred to your wall also as well as to the column also. That means this is not a framed structure. Okay. तो क्या हो रहा है कि लोड जो है तुम्हारा ब्रिक वॉल भी ले रहा है, तो ये जो वॉल है, दैट वॉल इज अ लोड बेयरिंग वॉल, ठीक है। लेकिन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में द केस विल बी डिफरेंट, द वॉल्स व्हाट यू कंस्ट्रक्ट, वॉल को जो है आप बाद में भी बना सकते हैं, और जनरली हम लोग बाद में ही बनाते थे, हम लोग स्ट्रक्चर को कंक्रीट करके ढलाई करके ऊपर जा स्पीड से, वेरी वेरी स्पीड वी कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, ठीक है। बाद में लेटर ऑन व्हाट वी डू बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, जैसे मान के चलो नीचे वाला फ्लोर में हमको सिक्योरिटी रूम चाहिए, ठीक है, एक सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी कैमरा रहेगा, कुछ लोग ऑब्जर्वेशन में बैठेंगे, कुछ फाइल्स रहेगा, डेली का मेंटेनेंस रहेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, कितना डीजी मेरा चला है, ठीक है। और भी जो ऑफिसेस है, क्लीनिंग स्टाफ का अलग रहेगा ऑफिस, ठीक है, सिक्योरिटी का अलग रहेगा, इस तरह से नीचे में क्या है कि रिक्वायरमेंट अलग है, नीचे में बिल्डिंग मेंटेनेंस का हम पूरा ऑफिस बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, हम उसमें अलग से जैसा जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है, हम वैसा वैसा वॉल डाल के रूम्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में मान के चलो कि कोई गेमिंग ऑफिस है, मतलब कोई गेम का ऑफिस है, तो वो ऑफिस अलग रहेगा। कोई अगर सीरियस दफ्तर है, जैसे कोई मान के चलो कोई कंपनी है, ठीक है, टैक्स इनकम टैक्स का ऑफिस, तो दैट विल बी लाइक अ डिफरेंट, ठीक है। गेमिंग का ऑफिस एकदम डिफरेंट रहेगा, उसके ऊपर अमेजन का ऑफिस है, अमेजन, वो दैट विल बी लाइक अ डिफरेंट, ठीक है। या कहीं पे रिलायंस फ्रेश खुल गया, या रिलायंस का मॉट खुल गया, तो दैट विल बी लाइक अ टोटल डिफरेंट स्पेस, तो उसको स्पेस को डिफाइन लेटर ऑन हम कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन हमारा रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर हमको शोरूम बनाना है तो शोरूम की तरह हम उसको पार्टीशन वॉल या सजा सकते हैं, अगर हमको कुछ सीरियस ऑफिस बनाना है तो हम उस तरह से ऑफिस बना सकते हैं, तो वी कैन लेटर ऑन डिसाइड एंड वी कैन बिल्ड इट, इसके अंदर में इंटीरियर कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट होता है ये इस तरह का है, लाइक कंबाइंड ऑफ बोथ, ठीक है। ये कोई फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे एक बार वॉल हमने खड़ा कर दिया, बाद में उसको इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके, इसको चेंज करना, या उस वॉल को मतलब वॉल को तो हटा ही नहीं सकते, क्योंकि वॉल को अगर हम हटाएंगे तो इट इज वेरी रिस्की, है ना, क्योंकि लोड आ रहा है उस वॉल पे, जो है पूरा लोड है, इट इज वेरी वेरी रिस्की टू डिमोलिश दिस वॉल, और अगर हमको चेंजेस भी करना है तो इट इज वेरी रिस्की, इसीलिए ऐसा ऐसा सजेशन नहीं दिया जाता। आज के टाइम पे ये जो कर रही है गलत है एक्चुअली। तो यहाँ पे दुमका में बिल्डिंग बन रहा है, नॉट इन दुमका, मेनी पर्सन आई सीन, ओके। ये जो बिल्डिंग है, अभी तुम जैसे नेक्स्ट कभी घर बनाए अपना ना अपना, कभी घर बनाओगे, या तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार पड़ोसी तुम्हारा पापा या कोई अंकल ही हो सकता है कि कोई और एक घर बनाए या कुछ बनाए, है ना। तो उनको तुम सजेस्ट करो कि नेवर गो फॉर दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो अब यहाँ पे लोग कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाइए, मतलब आप पहले कॉलम बीम, आपका फुटिंग कॉलम बीम स्लैब बना के पूरा कंप्लीट करके, अगर 2 महला 3 महला बनाना है तो 3 महला आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद वॉल को कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है, सेपरेट करके। हाँ, उसमें आप वॉशरूम का, किचन का, या जो भी तुम्हारा प्रोविजन है, वो प्रोविजन को तुम वहाँ पे रखो, ये नहीं कि वो भी बाद में डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका जो लोड आएगा, ठीक है, उसका जो फंक्शनलिटी है, जैसे अभी वॉशरूम है, तो वॉशरूम में तुमको पाइप जाना पड़ेगा, ठीक है, सॉइल का पाइप अलग रहेगा, वाटर सप्लाई का पाइप अलग रहेगा, है ना। तो उसके लिए तुमको प्लानिंग करना पड़ेगा, इसके लिए बिफोर यू गो फॉर कंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू द प्लानिंग, you have to put these things right, okay, then you go for construction, ठीक है। पार्टीशन वॉल रहेगा, that partition wall you can give later on, ठीक है, and I will suggest you give later on, first you construct this frame, okay, this frame will be done, then based on your requirement you can do, okay. So this I have given a very simple example, okay.
It will all the frames will not be like this. I have given a very straightforward or simple example, but to make you understand that what is a frame structure and what is a non-frame structure. Nowadays, you go. My suggestion would be you go for frame structure. Okay, very safe. It will be economical also. Okay, you need less brick work. यहाँ पे अगर 10 इंची का तुमको ब्रिक वर्क देना पड़ेगा, यहाँ पे तुम 5 इंची का जस्ट एक पार्टीशन वॉल दे दो, दैट इज एनफ फॉर दिस दिस फ्रेम। तो जैसे ही तुम्हारा वॉल का थिकनेस कम हो गया तो कम ईटा लगेगा। ईटा अगर कम लगेगा तो मसाला भी तो कम लगेगा उसको जोड़ने के लिए, है ना? तो तुम्हारा कॉस्ट का सेविंग हो जाएगा। ठीक है, बाकी कंक्रीट का जो कॉस्ट है वो तो तुमको यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिना कॉलम का तो वो बनाएगा नहीं। कॉलम तो यहाँ पे he is providing this column, so here also you will have a column, so the cost will not be much varying, it will be almost same। लेकिन हाँ, ये बिल्डिंग बनाने के लिए तुमको पूरा डिजाइनिंग करनी पड़ेगा एक एक चीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बिना डिजाइन के वो अपने आइडिया से बना देता है। ठीक है, और वो चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब कोई मिल बांट के लोड को ले रहा है, ब्रिक वॉल भी ले रहा है, तो यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी ओवर हियर। बट यू गो फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर, डेफिनेटली यू हैव टू डिजाइन इट वेरी वेल, बिकॉज एक भी कॉलम या एक भी बीम फेल हुआ, ठीक है, तो देयर इज अ डेंजरिटी दैट definitely your one one column or one beam failure will impact the other। ठीक है, जैसे ये कॉलम अगर फेल होता है, मान के चलो वन कॉलम इज फेलिंग, ओके, तो क्या होगा, दिस दिस कॉलम एंड दिस कॉलम विल बी ओवरलोडेड। ये ओवरलोड हो जाएगा। इस कॉलम का अगर कैपेसिटी है 10 किलो न्यूटन, ठीक है, जैसे ही ये फेल हो गया, इसके ऊपर 15 किलो न्यूटन आ जाएगा, इसके ऊपर 15 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या है कि ये ओवरलोड हो गया, ये कॉलम जो है ओवरलोड हो गया, तो इसमें चांसेस फेलियर का चांसेस और भी बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, इसको अगर अच्छे से डिजाइन किया गया तो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल ये होगा, स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो वी विल सी द फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर का बेसिक को समझेंगे, और कोडल प्रोविजन के बेस्ड ऑन योर कोडल प्रोविजन वी विल ट्राई टू डिजाइन वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, इसको ही देखेंगे, डिजाइन करेंगे, और उसी डिजाइन के माध्यम से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग। ठीक है, बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा, और वी विल बी एबल टू डिजाइन वन कंप्लीट बिल्डिंग। ठीक है, तो दैट विल बी लाइक एग्जांपल। अब ऐसा नहीं कि उसी को सीख लिया और सब जगह वही सेम फॉर्मूला यूज होगा, नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए तुमको। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन तुम कर सकते हो, फर्स्ट यू लर्न इट एंड देन यू कैन डू द मॉडिफिकेशन। ठीक है, we will wind up our class over here। next class we'll start from here and we'll try to design one example and we'll see। ठीक है, तो आई होप यू Yes. अंडरस्टूड। और जो भी IS 456 का बेसिक्स है उसको रिवाइज करो, क्योंकि वो यहाँ पे भी काम देगा और तुमको RCC 1 में काम देगा हर जगह पे। अभी जैसे आफ्टर यू फिनिश योर इंजीनियरिंग, डेफिनेटली यू पीपल आर गोइंग फॉर जॉब, सम कंपटीशन